Good afternoon, everyone. It's such a pleasure to be surrounded by the most adventurous species on earth, the entrepreneurs. The most adventurous and risk-taking species. I mean, सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे मौका नहीं मिला, तो ऑथर शेरी के परमिशन से 30 seconds में मैं भी इंट्रोडक्शन दे दूँ. Although thank you for the very sweet introduction here. So I've been, क्योंकि आप tenure पूछ रहे हैं, I've been into business for 35 years. We've got a group of 12 companies, all into different verticals. I'm the founder of the group. And by passion, I do interact with media. I speak on economics, business, finance. So people who are fond of also watching those debates where those politicians are ready to break the screen, Congress and BJP and Samajwadi parties. So you'll probably find me sitting there somewhere as an economist. Plus I do talk shows on economics, finance and business. I'm also a startup mentor. I mentor about 200 startups based out of Silicon Valley in America and Bangalore, Gurugram, Pune and other places where the startup hubs basically. They're mostly tech startups which I mentor. It's one of our tech division. So such a pleasure. I mean, being amongst entrepreneurs is always a pleasure. And how many people have quit jobs to start their businesses? Okay, so you basically kicked off your bosses at some point of time. But hang on, only to be sometimes your own accountant, sometimes to be your salesperson, sometimes to be your office boy, PN as well, and sometimes to be your marketing manager as well. And so somebody was asking me, I've kicked off my 9-to-5 job. So I said, you might have kicked off your 9-to-5 job, but आपने 24/7 का नौकरी ले लिया 9-to-5 kick off करके. So that's the truth of entrepreneurship. But it's fun because being your own boss is fun. So such a pleasure, from food to investments to adhesives, so many businesses, all diverse. And it's a wonderful platform because if Author Sherry can bring you together, well, business is about networking. आप लोग सब एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ पता नहीं कहाँ क्या किसका किससे रिश्ता हो जाए और वो पार्टनरशिप कहाँ की कहाँ पहुँच जाए. Some of the finest collaborations in the world have happened like this, just over a cup of tea or a cup of coffee or probably having some raita or a naan or something. That's how it happens. So I think a wonderful opportunity to network. As for entrepreneurship, I would say that I think what I have found being a startup mentor, all startups are entrepreneurs. I mean, startup तो एक 2016 में यहाँ पर मोदी सरकार ने एक टर्म निकाल दिया startup. Basically तो JRD टाटा भी startup ही था कभी ना कभी. Everybody is in startup. So I think I have found that if you really want to scale up, you're all part of MSMEs, isn't it? Micro, small, medium enterprises, because you're all growing from that level. And so what I have found that, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं. You just need a vision. और हम लोग क्या होता है, हम लोग उस grind में, we get locked in that grind. सुबह जाना है आज, we have to meet this person, that person, कल उससे meeting है, परसों उससे meeting है, यहाँ से पेमेंट लेनी है, वहाँ से पेमेंट लेनी है, ये ऑर्डर देना है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, ये करना है. यू गेट सो लॉस्ट इन दैट ग्राइंड दैट आपको बिजनेस स्केल जो नेचुरल प्रोसेस से स्केल हो रहा है ईयर ऑन ईयर वो तो होता रहता है, पर जो एक विजन है ले जाने का वो बहुत सारी बार नहीं हो पाता. इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों का नहीं हो पाता. You do grow from the time you started, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Somebody was 47 years. His age was also not 47, but he was 40. Obviously, must be second, third generation. But I think if you really have a vision, so what I have found, if you can do this to you, because I run a group of 12 companies, but I'm the most khali person in the company. If you remain busy, then something is wrong, because then you will not get time to think about the next level of your business. आपको तो time मिलेगा ही नहीं, वो तो रोज़ की चिंता है. किसी दिन क्लाइंट ने, कस्टमर ने कुछ कह दिया, किसी दिन फंड्स की प्रॉब्लम आ गई, किसी दिन ऑफिस में फैक्ट्री में लाइट नहीं है, किसी दिन ट्रांसपोर्ट नहीं है,
किसी दिन स्टाफ छुट्टी मार गया, यू नो, ज़रूरी आदमी, यार ये क्या मुसीबत है इस. So you'll have all sorts of problems. Sometimes customer rejects your work, makes a nasty comment on you, आपकी सर्विस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में. तो you get engaged in this grind. Whereas if you can afford to be a little free, and if this is your business, you should be sitting here, thinking from here, look, having a bird's eye of your business. Then only your business will scale up. अगर आपको business को grow करना है, तो आपको बिजनेस को ऊपर से देखना पड़ेगा. आप अगर उसमें ही उलझे रहेंगे तो ग्रो तो करेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैवंट ग्रोन, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव ग्रोन. बट इफ यू वांट टू, आई थॉट सिंस आई एम हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई माइट एज वेल गिव यू सम टिप्स व्हिच आई हैव लर्नड ओवर माय 3.5 decades of business career, that you have to remain free. आप बिल्कुल ऐसे सोचें, आप ऐसे देखें जैसे कोई और बिजनेस कर रहा है और आप दूर से बैठ के उसको देख रहे हैं, तब ग्रोथ होगा. अगर आप खुद उसमें खो जाएंगे तो यू विल ओनली बी एबल टू ग्रो टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. प्लीज कीप दिस इन माइंड. आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज़ वेरी सटल. और आप पलट के पिछले अपने 5 साल 10 साल देखना चाहते हैं, यू वांट टू टर्न बैक एंड लुक एट योर लास्ट 10 years, तो यू विल फाइंड पता नहीं कब बीत गए. यू नो, व्हेन डिड आई, कब शुरू किया था, आज 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, मालूम नहीं इतने साल कैसे बीत गए सडनली, यू नो. और ठीक है, हमने शायद 50 लाख का बिजनेस करते थे, अब 5 करोड़ का करते हैं, 10 करोड़ का करते हैं, 20 करोड़ का करते हैं, 50 करोड़ का करते हैं, 100 करोड़ का करते हैं. बट इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, सो माय मंत्र वाज दैट मूविंग फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल, स्मॉल टू मीडियम, एंड देन मीडियम टू लार्ज. माय एडवाइस इज कि आप MSME से निकले. MSME से निकले मेरा मतलब बिजनेस बंद करना नहीं है. MSME से निकलने का मतलब है कि यू मूव टू द लार्ज स्केल, दैट यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो आई कैन ऑलरेडी सी some mental reactions to it. It's such a pleasure talking because, you know, I do about 6 to 7 shows a day on various TV channels. The only thing you're looking at is one dark hole, a camera, no reactions from people. You know, you're just talking to, क्या कभी कभी तो ऐसा लगता है किससे बात कर रहा हूँ, पता नहीं कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा है. But when you're talking to a lively audience, that to such entrepreneurial people, it's always a pleasure. So I'll just wind up in 2-3 minutes. I mean, I always like an interactive session. भाषण वाषण देने में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं, उतना नेताओं के साथ घूमता हूँ कि मुझे भाषण सुन सुन के कान पक गए हैं. So I'll love to, you know, if somebody's got a question or something, general question you want to ask, I can probably share my experience in 1 or 2 minutes. Is that okay, Sherry? Just 2-3 minutes of, if somebody wants to ask something. Yes, please. Yes, because I remain free personally. And when I remain free, I found when I started my first company in 1989, 90, I was also as busy as anybody. But then as I progressed, I studied a lot. I did a lot of courses here in the UK, went to US, back here in India. I did a lot of study degree, did my MBA, did law, did my finance, did economics. So did my CA twice. I did it from India, then I went to UK, did my CA again from there. So what I learned is that when you remain free, थोड़ा थोड़ा आप बिजनेस को दूर से खड़े होकर देखिए, बिजनेस में उलझ मत जाइए. पर वो आप, यू कैन टेल मी, कहना आसान है, करना मुश्किल है. ये कैसे हो सकता है यार, हम पीछे हट जाएंगे तो बिजनेस का भट्टा बैठ जाएगा, or whatever thought you may have. But if you can do that, then you will be able to take your business to the next level. Just one more, any more questions from anybody who wants to ask anything about the business, about marketing, finance, HR, IT, you know, your emotional department, your ups and downs बहुत होते हैं. कोई दिन, no 2 days are alike in business. किसी दिन आप बहुत खुश हैं, wow, I've got this order, I've got this client. Next day, क्लाइंट तो आ गया, पता लगा स्टाफ भाग गया वहाँ से. यू नो योर मेन पर्सन इज मिसिंग, पावर नहीं है, तबीयत खराब हो गई. सो इट्स ऑल अप्स एंड डाउन्स, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस. बट आई पर्सनली फील दैट व्हेन यू गिवन एवरीथिंग टू योर बिजनेस, जब आपने पूरा अपना जी जान लगा दिया है बिजनेस में और
नौकरी वोकरी का ऑप्शन नहीं रखा, एंड you want to earn out of your business and want to make a mark for yourself. आपके social friends जानते हैं, relatives जानते हैं, he or she is into that business, then I think you should try and make the best out of it. I have very closely been associated with some of the wealthiest business families in the country, including the Tata House, including the Birla House, one section of Birla House, including the Ambanis, including the Adanis, some of the top business houses in the country. And this is what I found, that the head of the business doesn't get involved in the business. वो business को दूर दूर से देखते रहते हैं. वो the advantage of looking from a distance would be that you will be able to give a direction to the business. When you are not driving a car and you're sitting alongside, you are able to navigate better than when you are driving the car. So better is to navigate your business from a distance. It's better said than done. The way to do is a long discussion. Maybe you can have a person who takes your place, whereas you sit aside and keep doing your business. So I assume that there is no further questions to be asked. It was absolute pleasure being amongst you. And what should I wish you? Where's author Sherry? I thought I'll probably मैं आया हूँ तो you always give your best wishes. So I was thinking, what should I wish? What should I say? May you all be Mukesh Ambani's. I mean, 9.55 lakh crores. कल की बता रहा हूँ आपको, मेरे पास रोज का होता है. 9.55 lakh crores is what that man has. $105 billion. अगर उसकी आगे की 25 पुश्तें ब्रेकफास्ट में ब्रेड और लंच में रोटी, शाम को नान चावल नहीं खाएं, सिर्फ नोटों को चबाएं, तो भी कम नहीं पड़ेगा. सो मे यू ऑल बी मुकेश अंबानी. थैंक यू.